मुत्तहिदा अरब इमारात के एक मारूफ कारोबारी ग्रुप अल मतिया ग्रुप और मिलीनियम प्लाजा होटल के दरमियान मुश्तरका कारोबारी मंसूबों के इजरा और तकमील तरक्की के लिए एक याददाश्त पर दस्तखत हुए। इस खसूसी तकरीब के मेहमान खसूसी हिज़ हाइनेस शेख ओबैद अल मखतूम थे, जबकि इस अहम कारोबारी याददाश्त पर दस्तखत अल मतिया ग्रुप की जानिब से हिज़ एक्सीलेंसी जुमा अल मदनी ने किए। इस मौका पर हिज़ हाइनेस शेख ओबैद अल मखतूम ने एक्सीलेंसी जुमा अल मदनी और अल आक्स ग्रुप के आला उहदेदारान इजाज़ मुनीर के लिए मुबारकबाद के साथ साथ नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। ये खूबसूरत यादगार तकरीब मिलेनियम प्लाजा होटल दुबई में मुनक़िद हुई। इस तकरीब के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन में हिज़ एक्सीलेंसी मोहतरमा मुनीरा अल मदनी, मिस जुवेरिया गुल, चेयरपर्सन ए इवेंट्स, चौधरी लुकमान CEO इवेंट, हसाम कासिम और बैरुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस खूबसूरत और रंगारंग तकरीब की एक ख़ास बात मुत्तहिदा अरब इमारात की खूबसूरत सकाफ़त का एक नमूना वो रवायती रक़्स था जो यहाँ के अवाम के लिए भी और बैनुल अक़वामी सतह पर और हर दिल अज़ीज़ बन चुका है। अल मतिया ग्रुप की जानिब से हिज़ हाइनेस शेख ओबैद बिन सुहेल अल मखतूम, इजाज़ मुनीर और मिलेनियम प्लाजा होटल की जानिब से जनरल मैनेजर मिस्टर पॉल ने इस तफ़हीमी याददाश्त पर दस्तखत किए। इस कारोबारी इफ़हाम व तफ़हीम के मामलात में होटल मिलेनियम प्लाजा की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात में खेलों के क्लबों से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स को 25% रियायत देने के अलावा इनके मुलाजमीन को भी ये रियायत फराहम की जाएगी। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात के तमाम खेलों के अथॉरिटीज़ और फेडरेशंस भी इसमें शामिल हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Special this night is we are thanks to Mr. Juma. Mashallah, he called that all groups he came here, and we are promoting especially Al Matiya group. Al Matiya group, this is a good achievements, and now Millennium is now our part of the group, and Alhamdulillah, we are going to big, and our vision is big. We will do a lot of business investments. We also doing a lot of works, and Alhamdulillah, in future we have a good plans and good projects. Inshallah. Especially we this evening we call that our partners and everyone. You seen that the Highness will be came here especially, and Inshallah Highness will be also part of that Al Matiya, and it's our good sport, and we are also looking a lot of business opportunities. Inshallah, hopefully future you seen a more healthy group, and Inshallah now Mr. Juma, he is tell you about that evening. How is this evening today? Yes, Mr. Juma. First, thanks to my partner is Mr. Muhammad Ijaz about what he gave the information, and today we are happy to also we said for the new partner, the people from the Millennium Downtown Hotel. And today we announced the special offer which want the people who's in the Dubai Sport Council and Sharjah Sport Council and Abu Dhabi Sport Council, they will take 25% discount from the hotel, and this offer came from Al Matiya Group. And same that time also, I think we have good plan. We start now with Mr. Muhammad Ijaz, what we promised in the beginning when we signed the MOU. We will do so many events, so many projects, so many things. We are looking to bring the investors to UAE. Then we will start to the second level, which one we will going to the next country who's the GCC, and it will be global and in the Middle East. Sure. We have so many ideas. Also we have something is more important in December. We are now organized for this one with Mr. Muhammad Ijaz. Mashallah, he has so many ideas. He has planned also in Saudi Arabia. He has planned also to bring ministers, people in January. Royal family also, they will coming. Sure. Most billionaire, they will come from the world in January. Just wait for that conference, big conference. It will be in December, inshallah. And I said thanks to my partner Muhammad Ijaz about what he give the idea. What are the main segments of today?
Well, to be honest, today for us, for Al Matiya Group, it was a very big day because we had an important MOU signatory with Millennium Hotel, which we are going to talk about it after that. And we were honored here to have the presence of His Highness Shaikh Obaid Al Makhtoum, as well other personalities from the city, and our beloved guests, and also dignitaries and diplomatics. I have to